Hello dear learners, welcome to ComSkill. I am Satyam Mishra. Today I am going to tell you about time. How to tell time in English. As we know that the way we share time in Hindi, it is not exactly we share in English. Even in English as well, there are multiple ways to just tell the time, but the correct format that we need to learn is different. So today I am going to tell you. Let's proceed now. So the first thing that if I ask you what is it, you'll say 9:10. It is right, not wrong, but it is not the correct format. So what is correct format? How to say? Next, what is it? Please tell me what is it? 10:15. So now we are going to learn how to share time in appropriate manner in English. So let's start from here only. Very first thing, telling time, you'll get two things here. First one is past and then true. We are going to use these two things and the final result will be like this: 9:10, and we'll say it to 10 past 9. What will we say? 10 past 9. And the second one is, suppose it is 8:50. So what will you say? 10 to 9. 10 to 9. सो इन हिंदी इफ़ यू अंडरस्टैंड, इसका मतलब हुआ कि 10 मिनट बीत चुका है 9 में, और हियर इफ़ यू सी हियर, सो 10 मिनट बाकी है 9 बजने में. सो दिस इज़ द एक्चुअल thing that we are going to understand, that how to say it and what are the correct formats of saying it. Here you will understand meaning of quarter, half, and then how to say and when to say to and when to say past. Let's proceed now. So I'm going to make a clock. So in this clock, if you see, it has 360-degree angle, and here there are three hands in a clock. We all know first hand. What do we call to first? Our our hand, and the second one is minute, and third one is second hand. minute, hand, our hand. सो घड़ी की सुई को हम क्या कहते हैं? हैंड. व्हाट डू वी से इट? हैंड. तो जो सबसे छोटी वाली सुई होती है, और you'll say that it is a thick one, so we call it our hand. And the second one is that is longer than the first one, we call it minute hand. And the thinner, बिल्कुल पतली वाली और लंबी वाली सुई जो होती है, इसको कहते हैं सेकेंड हैंड. बट in telling time, we don't use this second hand. We only use two. One is hour and second one is minute. So let's draw your clock and understand. If you divide your clock in two parts, you'll see first part and the second part. In the first part, in the first half, you see that when you start telling time, it will start from here and it will go till here. इसके बाद आपको क्या करना है? You will start from here and you go here. तो आपको आधा, half of the clock ट्रेवल करना है लेफ्ट हैंड, एंड हाफ ऑफ द क्लॉक आपको ट्रेवल करना है राइट हैंड. इज इट क्लियर? I hope it is clear to all. Now let's proceed. अब जब आपने इधर से क्लॉकवाइज
हाफ ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ द क्लॉक कवर किया, तो इसको आप बोलोगे पास्ट, इसको बोलोगे पास्ट। वहीं जब आपके जो मिनट की सुई है वो हाफ को क्रॉस करती है, आफ्टर दैट यूल से टू। टू मीन्स इतना अभी बचा हुआ है। जैसे 9:40 हो रहा है, तो घड़ी जो मिनट की सुई होगी समथिंग यहाँ पे होगी, तो आप यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे, तो आपको पता चलेगा अभी 20 मिनट्स बाकी हैं 10 बजने में। तो 20 टू 10 यही राइट फॉर्मेट होगा। जबकि अगर 10:20 हो चुके हैं, तो 20 मिनट बीत चुके हैं 10 बजकर, सो 20 past 10, this will be the format. I hope it is clear to all. जो आधी दूरी है आप क्लॉकवाइज मीन्स इस डायरेक्शन में, आधी दूरी एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में आप तय करेंगे। सो दिस इज द वे ऑफ telling right time. So now I am going to draw some of the times that you are going to share in English. Okay. After this I will tell the quarter, how to draw quarter. Okay. 12, and here we'll see 6, and next is 3, next is 9. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. That's how we divide it. Now I'm going to draw, see here, this is hour hand and this one is minute hand. So what's time? If you simply see, you will see 3 5, but the way I have asked you to share, that is different. You will say 5 past 5 past 3. Clear? What if you see your minute hand will be here? If your minute hand traveled half of the journey, so time will be 3:30. But how will you share it? क्योंकि आधी दूरी तय कर चुका है, तो इसको बोलेंगे हाफ पास्ट, आधा बीत चुका है। क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट। Half past 3. This will be the correct format. Half past 3. Is it clear to all? Now, if you want, you can take a screenshot of it. Let's proceed. I am giving you some of the times. Just let me know what is the correct time. I will give you time only 2 seconds of thinking. What is it? Yes, 20 past 2. 20 past 3. 29 past 1. 9 past 3. पहले मिनट बोलना है, फिर घंटा. ओके, फर्स्ट मिनट देन आवर. नेक्स्ट 2 को समझते हैं. हाउ टू शेयर 2. फॉर शेयरिंग 2 we need to go more than half of the journey. So here I'm going to just remove it. If you want, you can take a screenshot of it as well.
So if you just cover more than half of the journey, you'll see here your this minute hand, it will be something like this. And if you see your clock like this, if I ask you to share time, you will say something like this, 3:35. But what actually you need to see, जब हाफ ऑफ द जर्नी इसने क्रॉस कर लिया, देन अब आपको यहाँ से काउंट करना है कि 4 बजने में कितने मिनट बाकी हैं. दैट मस्ट बी इन योर माइंड. सो यूल फाइंड कि 25 मिनट्स बाकी हैं 4 बजने में. सो योर करेक्ट फॉर्मेट विल बी 25 to 25 to 4. Clear? I hope it is clear. So let's go for the quarter. Quarter is just, you know that we just take a circle and we divide it in 4 parts. To each part is a quarter. There are 4 quarters in a circle. So what happens, जैसे ही आपकी जो घड़ी होगी यहाँ से चलना शुरू की, और जब भी जो मिनट की सुई है वो 15 के सामने आई, या फिर इधर कहाँ आई, 45 के सामने आई, तो इधर से 15 मिनट बचा और इधर से 15 मिनट बढ़ा. जैसे अगर आपने कहा 9:15, सो क्वार्टर पास्ट 9, क्वार्टर पास्ट 9. इधर से अगर 8:45 हुआ तो 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो क्वार्टर to 9. So this is the only thing that you wanted to learn, I hope. So I'm just writing some of the times you need to describe it. Allow me a minute. Let's proceed now. It is quarter past 9. What is this? It is quarter to 9. 15 मिनट बाकी है 9 बजने में. नेक्स्ट, it is quarter past 3. What is it? 11 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, एक क्वार्टर बाकी है 11 बजने में, तो आप क्या बोलेंगे? क्वार्टर टू 11. क्लियर? दैट्स हाउ यू नीड टू शेयर. बाकी की चीज़ें आपको जैसे लिखना है वैसे लिखना है. केवल 2 से 3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है. जैसे घड़ी की सुई 15 पर पहुँचे तो क्वार्टर, 30 पे पहुँचे तो हाफ, 45 पे पहुँचे तो क्वार्टर टू. बस इतना ही ध्यान देना है. अदरवाइज सब चीज़ें एज इट इज चलेंगे. मिनट हमेशा पहले बताया जाएगा, उसके बाद आवर बताया जाएगा. I hope it is clear to all. That's all about our today's class, and on every Sunday you'll get a class, and in this I will describe some of the important topics that you need to learn. Stay tuned with us, and if you want to connect, you'll get all the details in description. Thank you.